Okay, so like we were talking about the mise-en-scène, props, makeup, costume, background, ambience, lighting, acting style, blocking, staging. Staging means how actors are standing and placed next to each other, and blocking means how they walk into the scene. Everything is pre-planned, has a logic behind, and comes under mise-en-scène. The best thing about Western cinema is that they firstly study film, and they study the psychology, film structures, storytelling structures, which is called narrative structures. We will be discussing them later on, when necessary by the end of this year. So firstly they study in film schools, and then they become filmmakers, and they also explore human psychology, some rules of filming, and how they can break them where needed, wherever needed. So this is how things go on actually. Moving on, we did little touch ups with lighting. Yesterday we talked about 3 point lighting, key light, fill light, and the backlight. We are going to resume from there. I'll show you some 2 3 video clips regarding mise-en-scène, and then we will start our textual analysis for that crime scene we started yesterday. So let's give it a shot, starting from yesterday's thing. So we started with this document, this handout yesterday. We explored high key lighting, wherever it's applicable, people go for it, as normally in happy scenes or normal scenes, real life scenes. But if you talk about crime genre or something fishy or some suspenseful thing or maybe some horror thing, it's preferred to go for low key lighting with dark shadows, which makes we as a human being little uncomfortable, little suspicious about something. And there's a logic behind. We talked about it, and I gave you a reference of House of Cards season clip, which I showed you in one of the few lessons, where two politicians were discussing some important matter, and it was in low light because it was something not so happy going on. That's why we also talked about costume, and we talked about staging, acting, walking styles, and we talked about performance styles, method acting, and we touched the blocking thing very briefly yesterday. So we are going to jump into the basics of lighting, because lighting is very important part of mise-en-scène. But I won't go into depth of lighting, because we would have some separate lessons for lighting only, where I will show you behind the scenes, but it will not be related to textual analysis or exam written answer. It will be related with your shooting, or jab wo waqt aayega, then we will have a thorough discussion on lighting and how to record a sound. And from next week probably onwards, we will start the discussion regarding your groups and your project. I'll share with you all the possibilities, the options we have given by Cambridge, and then we will see what we can do with those options. And more interactive lessons are coming up. We will be, learning less. Theoretical things would be very less, and we will be exploring practical aspects more in the coming weeks actually. वैसे भी क्योंकि अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, एवरी वीक एक या दो नए बच्चे एटलीस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐड कर रही है. सो इस वजह से मैं कोई अभी मेजर स्टेप नहीं लेना चाह रहा. अभी जस्ट थ्योरी को ही टच कर रहे हैं, इसके बहुत से बेनिफिट्स भी होंगे हमें. दैट्स व्हाई. सो we talked about 3 point lighting. हमने उस पर एक demonstration देखी थी. Reasons why lighting is needed in video production. Lighting can determine the mood of the video. हमने कल बात की थी कि हम सिर्फ lighting की placement और lighting के color से एक ही लोकेशन में, या लेट्स से रेस्टोरेंट का सीन है, हम उसी सीन को ब्रेकअप और सैड सीन भी कर सकते हैं, उसको हम डेट वाला सीन, हैप्पी सीन भी कर सकते हैं, उसको हम कोई क्राइम सीन भी कर सकते हैं, जस्ट यूजिंग द लाइटिंग थिंग. एंड लाइटिंग के साथ ऑब्वियसली कैमरा एंगल्स चेंज करते हैं हम, बेस्ड अपॉन द मूड ऑफ द सीन. कैमरा मूवमेंट चेंज करते हैं, एडिटिंग में भी कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ इफेक्ट्स या कुछ स्टाइल ऑफ एडिटिंग चेंज करते हैं, जिससे जॉनरा को सपोर्ट मिले या उस पर्टिकुलर सीन के जॉनरा को सपोर्ट मिले. फिर पुअर लाइटिंग का मतलब है मोर टाइम इन द एडिटिंग रूम. अगर आपने लाइटिंग पर प्रॉपर फोकस नहीं किया, कीप इट इन माइंड, नेचुरल लाइट में कुछ नहीं होता. एटलीस्ट अगर आपने प्रोफेशनल कोई प्रोजेक्ट करना है,
रियल लाइफ प्रोजेक्ट में तो हम मोबाइल फ़ोन से अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी या सिनेमेटोग्राफ़ी कर सकते हैं, लेकिन वो आर्ट वर्क के तौर पे तो अच्छा होगा, सोशल मीडिया के तौर पे तो अच्छा होगा, बट इफ़ यू वांना प्रेज़ेंट दैट थिंग इनटू सम फ़िल्म स्कूल और some sponsors or maybe some filming community, तो फिर it will be a flop thing. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल एंड फेक। जो आपको सनलाइट विंडो के बाहर से नजर आ रही होती है आती हुई रूम के अंदर, वो भी सनलाइट नहीं होती, उसके पीछे बहुत हाई बीम लाइट्स लगाई होती हैं विद येलो जेल पेपर्स, जो कि सन का इफेक्ट दे रही होती हैं, क्योंकि कैमरा इज अ लाइट हंग्री डिवाइस, लाइक आई टोल्ड यू। कैमरा नॉर्मल लाइट से उसका कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर आप आउटडोर कर रहे हो तो यस, सनलाइट कैन बी ऑफ गुड लाइट सोर्स, मे बी आप की लाइट सन को बना लेते हो। फिल लाइट के लिए आपको रिफ्लेक्टर्स या आपको दूसरी लाइट्स चाहिए होती हैं, और बैक लाइट के लिए भी आपको वर्क करना पड़ा होता है। अच्छी सिनेमेटोग्राफी के लिए फिर आपको देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप कैजुअल फोटोग्राफी कर रहे हो या सिनेमेटोग्राफी कर रहे हो तो फिर तो सब चल जाता है। या जर्नलिज्म में कोई आप में से कोई बच्चा मूव करता है, देन many things would be okay, they will be okay. Anyways, poor lighting के बारे में हम बात कर रहे थे, so it means कि editors are going to end up paying for your mistake, unless of course you want to go back and reshoot the scene, but that means even more time needed to complete your project. तो आपको लाइटिंग को बहुत ज्यादा केयरफुल देखना होता है। आपको मैं आपके हाउस होल्ड घर में भी कुछ प्रोजेक्ट्स दूंगे जब तक पेंडेमिक चल रहा है, बेसिक मोबाइल फोन से फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी के लिए। तो फिर आई विल सी कि आप कैसे इन चैलेंजेस को कोप अप करते हैं। ऑब्वियसली पहले हम उसको थॉरली डिस्कस करेंगे, और जब कॉलेज खुल जाएगा तो हम कुछ प्रैक्टिस एक्टिविटीज भी करने की कोशिश करेंगे। वेल, एक मिनट स्टूडेंट्स, फाइन, परफेक्ट। उसके बाद हमने बात की थी लाइट जो है वो डिटरमिन करती है क्वालिटी ऑफ योर प्रोजेक्ट, जैसे भी हम बात कर चुके हैं। अच्छी लाइट को आप मैनेज करते हो और काम अच्छा हो जाएगा, एक क्वालिटी वर्क महसूस होगा। होता ये है, जब हम अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाते हैं और हमने लाइटिंग को ख़ास ख्याल नहीं रखा, हमारा मोबाइल फ़ोन का जो सेंसर है, वो अपने आप को ज़्यादा सेंसिटिव कर लेता है लाइट लेने की खातिर, एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, और फिर वो डॉट डॉट डिजिटल नॉइस, जिसको हम ग्रेन्स भी बोल सकते हैं, वैसे उसको डिजिटल नॉइस भी बोलते हैं, ग्रेन भी बोलते हैं, वो फिर स्क्रीन पे नज़र आते हैं अगर आप अपने टीवी पे या बड़े लैपटॉप पे देखते हो। मोबाइल फ़ोन में इतने प्रोमिनेंट नहीं होते। So we have to think about it लाइटिंग के लिए। और वी टॉक्ड अबाउट 3 पॉइंट लाइटिंग यस्टरडे, सो इट्स सेम एज इट इज, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और थोड़ा सा इमेज मैंने लगा दिया की लाइट, कल इमेज जो वीडियो देख रहे थे डिमॉन्स्ट्रेशन, उसमें राइट साइड थी, जरूरी नहीं है, सिर्फ उसको एक लाइट जो है उसके 20 से 45 के एंगल पे आप उसको वेरी कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये 45 से भी ज्यादा है, तो कहने का मतलब ये दिस वन द की लाइट, इसकी वजह ये है कि कोई एग्जैक्ट बुकिश रूल नहीं है। डिफरेंस सिनेमेटोग्राफर ये आर्ट फॉर्म है ना, आप अब जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा बुकिश भी पता होना चाहिए, बिकॉज इन ऑर्डर टू लर्न टू ब्रेक रूल्स फर्स्ट यू नीड टू लर्न रूल्स, राइट। सो ये की लाइट है। फिल लाइट जो है, या तो आप पीछे मूव कर दो, या इसकी थ्रो कम कर दो, या इसके आगे आप रिफ्लेक्टर नहीं, डिफ्यूजर्स लगा दो, इसके आगे कोई बटर पेपर लगा दो ताकि इसकी थ्रो कम हो जाए। और ये इसका पर्पज सिर्फ शेडोज को फिल करना है, लिट करना नहीं है। फिल लाइट तब इसको बोलते हैं। की लाइट इज द मेन की सोर्स टू लिट, दिस इज द कैमरा नॉर्मली। और बैक लाइट जो है, एग्जैक्ट बैक पे इसलिए नहीं रख सकते बिकॉज कैमरे में नजर आएगी। दूसरा, बैक लाइट, हाँ, जो स्टूडियोज होते हैं जो आप देखते हो, स्टूडियोज में वो जमीन से स्टैंड नहीं लगाते। जो प्रॉपर स्टूडियो होते हैं उन्होंने सीलिंग के साथ स्टैंड जो है वो लिफ्ट डाउन किए होते हैं, इसलिए बैकलाइट पीछे भी लगाई जा सकती है जो कि कैमरे में नजर नहीं आएगी। अदरवाइज बैकलाइट किसी भी साइड पे कर लेते हो, क्योंकि उसका पर्पस इसके सब्जेक्ट के बालों को या उसके शोल्डर्स को थोड़ी सी कंट्रोल्ड लाइट देना है ताकि वो बैकग्राउंड का पार्ट महसूस ना हो। देखो, ह्यूमन आई तो डिफरेंशिएट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड में कर लेती है, कैमरास नहीं कर पाते। उसके लिए हम नो डाउट हम डेप्थ ऑफ फील्ड और इस तरह के लेंसेज यूज करते हैं डेप्थ क्रिएट करने के लिए, बट स्टिल जब टीवी पे नजर आता है तो इट लुक्स लाइक समथिंग 2D। नो डाउट टीवी हमारा 2 डायमेंशनल चीज है, 2D ही नजर आएगा, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी सी 3D नेस पैदा कर सकते हो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। तो जब आप अपने सब्जेक्ट को पीछे से लाइट थ्रो करते हो, उसको हिट करते हो कंट्रोल लाइट, तो वो बैकग्राउंड से सेपरेट फील होती है, तो बैकग्राउंड बिकम्स अनदर लेयर एंड योर सब्जेक्ट बिकम्स पार्ट ऑफ अ फोरग्राउंड। तो थोड़ी सी 3D नेस उसमें फील होती है। उसके बाद लाइटिंग के बारे में थोड़ी सी और इसमें डिस्कशन लिखी हुई है, रिफ्लेक्टर, डिफ्यूजर्स एंड फ्लैग्स एंड आउटडोर इंडोर में क्या ख्याल रखना होता है, ये हम विल सी।
इसको हम भी डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेक यू टू सम वीडियोस. लेट्स गिव देम अ ट्राई, बिकॉज आज का हमारा एजेंडा है थोड़ा इंपॉर्टेंट. हमने आज टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ द क्लिप पे जाना है. उससे पहले मैं आपको 4-5 मिनट की एक दो वीडियोस दिखा देता हूँ, देन वी विल मूव ऑन टू समथिंग रियली कूल. लेट्स गिव इट अ ट्राई. पहले मीजोसेन के ऊपर हम बात कर लेते हैं. गेस आई मीन बात तो मीजोसेन पे करें. आई मीन मैं वीडियो लाइटिंग की भी स्पेसिफिक आपको नहीं दिखा रहा. रादर आई विल बी गोइंग फॉर something directly related to Mise. I hope you can see my screen and things are clear. In this video, I'm going to talk about one of the most important elements you can consider when analysing film, mise en scène. Now, as you can see, it's a French word. Being French, you should use your correct French accent. I believe I learned French for 4 years, so I'm pretty sure I can get it right. I believe the correct pronunciation is mise en scène. So make sure whenever you talk about mise en scène, you use your correct, very authentic French accent. Now, being French, it does not translate all that easily into English. There's a few ways you could interpret it. Some people say it means putting into the scene or everything in the frame. I like this definition. Setting the stage. It really conveys the idea that mise en scène is all about organizing the various elements into the frame of your film to best tell your story. Setting the stage. There's various things we need to consider when we're looking at that. You need to consider the sets. I've chosen a mise en scène of a very plain white background. That's the setting that I'm being shot in. There can be other things, of course, furniture and nature and whatever else is in the setting that you can see in the frame is an element of mise en scène. There's also props. Props are things that we hold, things that we touch, or the actors hold and the actors touch. Any object that the characters interact with or the actors interact with becomes a prop. We've also got the actors themselves, their physical appearance, so the choice of actor, the costuming they're wearing, makeup, as well as how they're holding their body, their facial expression, where they're placed in the frame. And finally, lighting. The way light and shade is used also helps to arrange the frame, to set the stage. But it's not just those 4 things that we need to consider in isolation. We need to think, how do they all work together? How are they arranged in the frame? That's called composition. How has the image been composed? And the way the different elements fit together can help communicate something as well. When we're talking about where things are placed in the frame, we can think in 2 dimensions. So we can think, are they on the left, right, or centered? Are they in the top third or lower third? We can also think about the 3rd dimension. How close to the camera are they? In the foreground, the midground, or the background? So when analysing mise en scène, I always ask 3 questions. First of all, what can I see? That was the list we looked at just before. Then, how is it arranged in the frame? How is it composed? That was the last point I made in the previous slide. And finally, what does this communicate to the audience? What do I see? Pause. Guys, these 3 points are super important for your textual analysis, especially the one which I'm going to show you today. The interrogation scene, जिसमें 2 British agents थे, captured by some Iraqi rebels, you can say, ठीक है? So what you can see, you have to keep it in mind. अभी हम दोबारा देखेंगे. How things are arranged, table, chair, interrogators, interrogatees, the weapons, the camera for recording the video. I mean, उसके अलावा द बॉडी गार्ड्स कौन कहाँ पर है, लाइट कहाँ से आ रही है, ये बहुत केयरफुली आपने देखना होता है. और आप डोंट नीड टू बी सो एक्स्ट्रा केयरफुल कॉशियस और इतनी टेंशन नहीं लेनी है. आपने जनरल ऑब्जर्व करना है, लेकिन जितना डिटेल में आप जाओगे एग्जामिनर उतना ही इंप्रेस होगा कि वाओ ही और शी हैज नोटिस दैट पार्ट टू, बिकॉज स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली कुछ चीज स्किप भी हो जाती है. तो अभी हम विदाउट थिंकिंग ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द एग्जाम टाइम हम जनरली उसको बेस्ट पॉसिबल वे में करने की कोशिश करेंगे. सो हाउ व्हाट यू कैन सी व्हाई एंड हाउ थिंग्स आर अरेंज्ड इन द फ्रेम, एंड उसका मतलब क्या है, क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है डायरेक्टर आपसे बाय प्लेसिंग दोज थिंग्स एंड एक्टर्स.
How's it composed? What does that communicate to the audience? Let's apply that to an example now. This is a shot from a very famous film, a classic film called Let me interrupt again. ये सिटीजन केन फिल्म है 1941 की है. आप में से मेजोरिटी को शायद बोरिंग लगेगी. हर फिल्म स्कूल में दिखाई जाती है बिकॉज इस फिल्म ने बहुत से रूल्स को ब्रेक किया था. इसमें नए रूल्स अडॉप्ट किए गए थे और इट इज कंसिडर्ड टू बी मास्टरपीस ऑफ दैट एरा. और इस वजह से अभी भी फिल्म स्कूल्स में सिटीजन केन जरूर दिखाई जाती है. एंड आई आल्सो सॉ दैट फिल्म इन एट एनसीए. सो the presenter here is also giving reference, so let's have a look. Citizen Kane by Orson Welles back in 1941. So let's go through that process. What can I see? How's it arranged? And what does that communicate? So I'm going to start by thinking about what I can see. So I can see the first thing I notice is in the foreground. So I'm already starting to think about how things are arranged. But in the foreground, I've got these two characters. What can I see about them? Well, I notice they're wearing dark clothing. The darker shades really stand out in the foreground there. I notice a tie here and a hat over here, so it's quite formal clothing as well. What else do we have in the foreground while we're here? All right, we've got these papers and something's being signed, so it looks to me like maybe it's a contract. That seems to be the main elements in the foreground. Two people in dark formal clothing signing some kind of legal document or contract. What else do I see? Okay, well, now I can look into the midground, and we've got another character here. So again, what do I see in the midground? What do I see about this man? Well, the first thing that really stands out to me is he seems to have a very concerned expression. Handwriting is not very neat today, but a concerned expression. I also notice, especially when compared to the two characters in the foreground, he's wearing lighter, more casual or sort of working class clothing. So that's something I definitely want to note. He seems to have poorer clothing. And I'll continue to look back in the frame, and really striking thing about this shot is that it has a frame within a frame. It's got the window back here in the background with what appears to be a young boy. And if you know the film, you know it is a young boy right there in the background. So we've got the window frame. And I'm already starting to think, what might that communicate to the audience? Well, it suggests that whatever's outside the window is separate. There's some kind of conflict or separation between what's going on inside and the character outside, the boy outside. And obviously there is the lone boy playing in the snow, which is very important, again, if you know the film. All right, I think that's the main things that I can see in this shot. So I want to look really closely. I want to see, okay, what's everything that's been put in and how's it all been placed and organized? And then I can start thinking about, well, what does that tell the audience? So here I've got a paragraph where I've analyzed that shot that we just looked at, and you can read through it and see how I've turned those ideas, those notes, those little bits of annotation into a fully formed paragraph analysing how mise en scène communicates to the audience. Now, unfortunately, I can see my my video feed is blocking some of it, but I'll read it out as we go through. Actually, guys, just to save today's lesson time, I'm not gonna make you read all these things or wait for him to read for us. Rather, point is के obviously आपने ये फिल्म नहीं देखी हुई, और जो आपके पास कैम्ब्रिज में 2 या 3 मिनट का पार्ट प्ले किया जाएगा, ऑब्वियसली आपने शायद वो फिल्म नहीं देखी होगी, वो सीजन नहीं देखा होगा. सो विद इन दैट शॉट, विद इन दैट सीन, आपको जो भी समझ में आ रहा होगा, आप उसको अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहे होगे. और बिलीव मी, अगर वो आपकी इंटरप्रिटेशन अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनर से टोटल ऑपोजिट भी है, बट स्टिल यू गिव वैलिड रीजंस, लॉजिक, आपको वो फुल मार्क्स देगा, आपको वो बिल्कुल सही तरह जज करेगा, बिकॉज अंडर योर अंडरस्टैंडिंग
your point of view, आपने क्या देखा, क्या observe किया, and why do you think those things are placed in that order? इससे क्या meaning communicate हो रहा है? ये examiner के लिए meaningful होगा, okay? So I'm using the ground on else. So we are just gonna pause here for this particular video. We may be talking about it later probably, or let's move on to another thing, rather not another thing, today's thing rather, क्योंकि I had another good video, but just to make today's lesson little fun, हम direct उस activity पे जाते हैं, and we will see. Well, so this is the clip I was talking about, I was referring to, और I'm sure हमने कल ये इसको touch किया था थोड़ा सा, so we can directly jump into it. हम इसको दोबारा देखते हैं. आज आप in terms of मीज़ोसेन इसको सबसे पहले देखोगे, although आप इसमें कैमरा वर्क unknowingly ऑब्जर्व करोगे, इसमें एडिटिंग स्टाइल भी देखोगे, लेकिन मीज़ोसेन से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज. सो हमें विदाउट बिफोर प्लेइंग हमें क्या नजर आ रहा है? एक सीसीटीवी कैम का एक की तरह का एक शॉट नजर आ रही है. वाइट शॉट है, एस्टैब्लिशिंग शॉट है, लेकिन आज हम कैमरा वर्क को इतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करें तो हम शॉट को छोड़ देते हैं. हमें कॉस्ट्यूम्स नजर आ रहे हैं, दो कैरेक्टर्स या सब्जेक्ट्स इस तरह वन आफ्टर द अदर, सॉरी ऑपोजिट टू ईच अदर बैठे हुए हैं. ठीक है, सामने छोटी सी टेबल है. लाइट सोर्स इज दिस मेन थिंग. ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है और इसी विंडो से लाइट आ रही है प्रोबेबली, या कर्टन है शायद इस वजह से. और यहाँ पे कैमरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक चेयर है, और एक आइसोलेटेड सा खाली सा कमरा है जिसमें फर्नीचर नहीं है. यहाँ पे किसी फर्नीचर पे उन्होंने वो फैब्रिक कपड़ा कुछ भी रखा हुआ है, डस्ट के लिए रखते हैं. इस पे वॉलपेपर लगा हुआ है. ठीक है, ऑब्वियसली एग्जाम में आप पॉज कर करके नहीं देख सकते, लेकिन शुरू में ऐसी एक्टिविटीज में आप पॉज करके देख सकते हो. ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, बाद में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. ठीक है, और यहाँ पे कोई गनमैन प्रॉब्ली खड़ा हुआ है. लेट्स गिव इट अ ट्राई. और वुडन फ्लोर है. एंड What do you want? Have you been watching the news recently? Hospital wards filled with burned children, your soldiers. कॉस्ट्यूम देखें तो ये इसने फॉर्मल पहने हुए हैं. ठीक है, और टाई नहीं लगाई हुई. या आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है, I can't see anybody. स्क्रीन फ्रीज हुई है या शेयर नहीं हो रही? It's just saying Umar Galani has started screen sharing, पर कुछ शेयर नहीं हो रहा. Okay. Okay guys, from here we're gonna start. Have you been watching the news recently? Hospital wards filled with burned children, your soldiers smashing into houses, humiliating my people, thousands of my countrymen tortured and killed. आप लाइटिंग ऑब्जर्व कर रहे हो, डार्क शेडोज हैं फेस पे, इंटेंशनली लो लाइट है क्योंकि एक तरह का सस्पेंस क्राइम जॉनरा चल रहा है, इंटेरोगेशन चल रही है. इनके कॉस्ट्यूम से पता चल रहा है कि ये भी फॉर्मल में है. इट मीन्स ये कोई हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है, ये मे भी कोई अंडर कवर क्रिमिनल है, कोई टेररिस्ट है जो कि नॉर्मली बिजनेस सूट में फिरता है ताकि पीपल कैन नॉट मे नॉट जज हिम और उसको पहचाने ना, रिकग्नाइज ना करें. और समथिंग लाइक दैट. और बाकी जो एजेंट्स हैं ब्रिटिश स्पाई एजेंसी के या MI6 के, वो You have brought chaos and anarchy to Iraq. Today we will hold you. इसका एक्सेंट भी बता रहा है कि ये एक फॉरेन एक्सेंट ही बोल रहा है, नॉट अरबिक इंग्लिश और इराकी इंग्लिश बोल रहा है. ये भी आप जज कर सकते हो. इसका मतलब है कि दिस गाय हैड बीन लिविंग अमंग देम बट ही वाज पार्ट ऑफ सम अदर ग्रुप. Count. We? टाइट शॉट्स बता रहे हैं, ये कैमरा शॉट तो है लेकिन मीज़ोसेन में कितना क्लोज दिखा रहे हैं ये. ठीक है, ये भी एक हमें मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है. It is you who decided that the war on terror involved invading my country. Okay, so we are all Al Qaeda now. You're not going to get very far. Really? Look, we can sort something out. To be honest, we've already... अच्छा, अनलाइक कैमरा वर्क जिसमें हमारे पास बहुत कुछ लिखने के लिए होता है, मीज़ोसेन में हमारे पास थोड़ी कम चीज़ें होती हैं. व्हेन यू विल टॉक अबाउट लाइट्स, यू टॉक अबाउट शेडोज, यू टॉक अबाउट कॉस्ट्यूम, कर्टन, रूम एम्बियंस, अगर आउटडोर है तो आउटडोर एम्बियंस, और वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, स्टैंडिंग स्टाइल, सिटिंग स्टाइल.
जब आप इन सब के बारे में बात कर लेते हो जनरली तो बात खत्म हो जाती है। तो मीज़ोसेन में इतना ज़्यादा कुछ आम तौर पे नहीं होता। यू कैन टॉक अबाउट मेकअप एज़ वेल, बट इस शॉट को देखो तो इसमें कैमरा वर्क तो बहुत ज़्यादा शेकी शॉट्स भी नज़र आ रही हैं, साउंड की भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन सिंस वी आर नॉट टचिंग द साउंड थिंग येट, सो साउंड को इग्नोर करके जस्ट हम विजुअली इसको मीज़ोसेन इसका देख रहे हैं। Cracked your attack cell. We know exactly what you're planning to do. So it's over. How do you know? इवन ये जो हैंडी कैम उन्होंने ट्राइपॉड पे लगाया, ये भी मीज़ोसेन में आएगा। ये कैबिनेट्स वगैरह, फर्नीचर, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ इट। इसके कॉस्ट्यूम भी। We found the house with the map to the tube in Dollar's Hill. You found out about that? How? You must have an informer in your ranks. Don't make matters worse by interfering with 2 officers of the British Security Services. We can negotiate safe passage for you to somewhere like Sudan in return for our release. That sounds promising. You ran an agent named Butterfly, I believe? I have no idea what you're talking about. You want to offer me a new deal? Read. What is this? This is no time for games. Read it or I will cut his throat. So, if you talk about mise-en-scène, you must have observed their costumes, their walking style. Obviously, this guy is in charge at the moment. इसकी authority है, इसका walking style different है, ठीक है? जो soldier था, ये जो उसका bodyguard था, उसका walking style different था, because he has little sophistication in him, because ये इसका brought up probably ऐसा है, he's Western, purely Western, he was living in their society, that is why. लेकिन at the moment he's in charge, so he's not shaky. The girl is shaky and the other agent is. And इस फुटेज की अगर मैं बात करूं गाइस, तो ज्यादा जो हमारे पास वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रही है वो लाइटिंग की मिल रही है, शेडो की मिल रही है, इनके कॉस्ट्यूम्स की मिल रही है। और अगर हम आज के उस ट्यूटोरियल पे जाएं व्हिच आई वाज शोइंग यू, कि व्हाट यू ऑब्जर्व्ड, हाउ दे आर अरेंज्ड, and what message these things are communicating to the audience, ठीक है? कॉस्ट्यूम क्या मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है? अब इसी mise-en-scène की बात करें, साउंड को इग्नोर कर दो, वो ऑब्वियसली वो भी सस्पेंस ऐड कर रहा है। इनके वॉकिंग स्टाइल, इनका टॉकिंग स्टाइल और द एम्बियंस क्या कम्युनिकेट करना चाह रही है, आपने जस्ट उसकी पॉसिबिलिटीज mise-en-scène में मेंशन करनी है, नथिंग एल्स। My name's Fiona Carter. I work as a British spy, and I'm being held by a group of fighters who will avenge the blood spilled in Iraq by American. और हम मेथड एक्टिंग की कल बात कर रहे थे, परफॉर्मेंस स्टाइल कौन कौन से होते हैं। ऑब्वियसली मेथड एक्टिंग, हम किसी एक्टिंग को तब कह सकते हैं जब हमने ऑब्वियसली एक्टर्स को पहले मूवीज में भी देखा और वो अपना टोटल हुलिया जेन्युइनली चेंज कर ले, अपनी फिजिक चेंज कर ले, अपनी बॉडी को शेप चेंज कर ले, बियर्ड ग्रो कर ले, बाल ग्रो कर ले, और उस रोल में यू नो ही फील्स टू बी द रियल गाय, ठीक है, जिसकी वो लाइफ पर या बायोग्राफी पर या उस पर काम कर रहा है या जिसको शोकेस करने की कोशिश कर रहा है, तब इट्स नॉट मेथड एक्टिंग बट इट्स गुड एक्टिंग, इट्स नॉर्मल एक्टिंग जैसी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन वाइज एंड सो ऑन। हाँ, जब पैरोडी होती है, पैरोडी में ऑब्वियसली एक्टिंग स्टाइल वो बीइंग सरकाज़म आ जाता है और वो थोड़ा फनी हो जाता है। अगर ऐसा कभी क्लिप आपके सामने प्ले करूं तो आप उसको उस स्टाइल से लोगे, वो तो फिर एक डिफरेंट परफॉर्मेंस स्टाइल हो जाएगा। अभी जनरली एक नॉर्मल परफॉर्मेंस स्टाइल है। आप इसके ग्लव्स भी जब mise-en-scène मेंशन करोगे, प्रॉप्स है ना, प्रॉप्स, इसके ग्लव्स, इसका जैकेट, इसका ये क्या कहना चाहिए इसको, डैगर तो नहीं कह सकते, चाकू, नाइफ, व्हाटएवर, और उसके अलावा
इसका सिंस इज अ ब्लैक अमेरिकन तो सॉरी ब्लैक ब्रिटिश नॉट अमेरिकन, ये ब्रिटिश एजेंट है. सो नॉर्मली जो भी उनका हुलिया होता है, बाल उनके छोटे होते हैं, ठीक है. यू हैव टू ट्राई टू ऑब्जर्व माइनर डिटेल्स जितना आप इजीली कर सकोगे. अभी मैं आपको एग्जाम के लिए कह रहा हूँ इजीली, लेकिन मेरी एक्टिविटीज के लिए आपको थॉरली बार बार प्लेबैक करके देखना है और लिखना है और सोचना है, कुछ इंटरनेट पे रिसर्च करनी है और मीजोसेन में क्या आ सकता है, एंड देन यू विल बी टॉकिंग अबाउट इट. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सीन दिस क्लिप यस्टरडे, सो मैं इसको बार बार प्ले नहीं करूंगा. रादर And it's allied. आई थिंक हमने देखा हुआ है. लेट्स गेट बैक टू द लेसन and let's have question answers regarding today's lesson, and let's